Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am creating this blog to show you my travel journey from Dubai to New Delhi. Today I am traveling to see my family in India. So I am really excited to show you my journey, and my flight is at 10 a.m. from Dubai Terminal, International Airport Terminal 1, and it is Air India. So I will show you all those updates. So stay tuned with me. Thank you. As you can see, I have reached to airport. It's Terminal 1 and I'm going inside, and let's see. Just hold on. I will show you the 360-degree angle. Here you see checking area 2. So I'm going to checking area 2. There you see. For the checking, and I'm going for the checking process, so let's see. Guys, as you can see, I got the boarding pass and checking is completed. I have one luggage that I have given to the for the luggage. So that's it. The check-in process is very easy and very fast, smooth. The experience was very smooth. Since you are having Nepal passport, I mean as a Nepali citizen, and you holding a Nepal passport, you don't require any visa to arrive India, because it is visa free. I mean we don't require any visa, right? So however, there is a few conditions that you need to meet. If you are as a Nepalese citizen, if you are traveling from a country like China, Macau, Hong Kong, and even in Pakistan, then in that case you require a visa to be stamped in your passport. So right now I'm traveling from the UAE, I mean from Dubai, so I don't require any visa to be stamped in my passport. That's it. I will go to I still have lots of time. I mean flight time is at 10 a.m. Now it is, I think, 7:15 a.m. only, so I have still 2 hours. So I'll just walk around this Terminal 1 airport and I will update you. So just stay tuned with me. Thank you. Immigration is completed. Now it was very smooth. It was through the e-gate, so we don't have there is no human interaction needed on that while immigration. So immigration is completed. So now I'm just walking over to my gate for the boarding, and still we have lots of time, so I will just roam here, there, and duty free. So I will buy something from the duty free, and that's it. Just keep on. I will keep you posted. So stay tuned. We are in duty free Terminal 1 duty free area. I'm going to do some shopping, like I'm not sure, but like chocolate and all those type of thing, and that's it. I will update you here. Just so stay tuned. विमान बोर्ड करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है और जो छोटे बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं। कृपया बैठें जब तक आपको बुलाया न जाए।
अब हम अपने फर्स्ट क्लास व बिजनेस क्लास के यात्रियों को आमंत्रित करना चाहते हैं कि वे अभी या अपनी सुविधा अनुसार विमान में प्रवेश कर सकते हैं। कृपया अपने बोर्डिंग पास और पासपोर्ट पेश करने के लिए तैयार रखें। एयर इंडिया को चुनने के लिए आपका धन्यवाद और हम आपकी शुभ यात्रा की कामना करते हैं। This is time for the boarding for first class and business class. My ticket is for economy, so I still have to wait for that announcement. Once it is announced, I will go for the check boarding. Okay, guys. This is Boeing 787. I'm in my seat inside the aircraft, and it is Boeing 787, and this is my window seat. I have already pre-booked. I have selected a ticket and in the window seat while booking the ticket online, so I don't have to say anything, and ticket counters that please give me the window seat. So that is the free choice for me. As you can see. As you can see, there's an announcement from the pilot. And this aircraft, you can see there is a display also, and you can see there's movie release, Hindi movie, English movie, everything is there. And there is a guard control, but it is not working for me. I don't know why it is not working. I try, but anyhow it works. But the touch response is very slow. And I have another thing, earphone. I am not sure where we need to put this one to hear the music. Anyhow, I will try to figure it out, and I will update you. Okay, so this is aircraft 787, Boeing 787. विमान की उड़ान भरने से पहले हम आपको इस विमान के उड़ान सुरक्षा संबंधी जानकारी देंगे। कृपया उड़ान सुरक्षा संबंधी इस वीडियो फिल्म को ध्यानपूर्वक देखें। मोबाइल फोन के प्रयोग से विमान संचालन में बाधा पहुंचती है। सुरक्षा के लिए कृपया सुनिश्चित करें कि उड़ान के दौरान आपका मोबाइल फोन बंद है या नॉन ट्रांसमिटिंग मोड जैसे फ्लाइट मोड या एयरप्लेन मोड पर है। लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग उड़ान भरने के बाद कैबिन क्रू से पूछकर ही करें। कृपया सुनिश्चित करें कि आपका हाथ का सारा सामान ऊपर बने सामान कक्ष में या आपके सामने की सीट के नीचे ठीक तरह से रखा गया है। गलियारों तथा दरवाजों के पास कभी भी कोई सामान ना रखें। अपनी खिड़की के शेड को हल्का करें। सीट बेल्ट बांधने का संकेत रहने पर कृपया इनका पालन करें। सीट बेल्ट बांधने के लिए मेटल कटिंग को बकल में डालें और बेल्ट को कसने के लिए स्ट्रैप के ढीले सिरे को खींचें। बेल्ट खोलने के लिए इस फ्लैप को उठाएं। विमान के रनवे पर चलते, उड़ान भरते या उतरते समय तथा उड़ान के दौरान जब कभी सीट बेल्ट बांधने के संकेत हो तो सीट बेल्ट बांधे रखें। अपनी सुरक्षा के लिए कृपया यात्रा के दौरान अपनी सीट बेल्ट ढीले कर बांधे रखें। कृपया अपनी सीट सीधी रखें। ट्रे टेबल, फुट रेस्ट
इनाम वीडियो यूनिट और हैंडसेट को नियत स्थान पर रखें। विमान के उड़ान भरते तथा उतरते समय तथा मौसम के खराब होने पर जब सीट बेल्ट बांधने के संकेत हो तो कृपया शिशु को दूध न पिलाएं। विमान के उड़ान भरते एवं उतरते समय शिशु को गोद में सीधा बिठाकर मजबूती से पकड़े तथा शिशु को गोद में लिटाकर न रखें। इस विमान में 8 आपातकालीन दरवाजे हैं। कृपया नोट करें कि बाहर जाने के दरवाजों की पहचान के लिए इस विमान में बाहर जाने के दरवाजों को हरे संकेत से दर्शाया गया है। इन हरे संकेतों के साथ एरो के निशान बाहर जाने के दरवाजों को दर्शाते हैं। इन हरे संकेतों द्वारा आप बाहर निकलने के नजदीकी दरवाजों का पता लगा सकते हैं। नजदीकी दरवाजा आपके पीछे की ओर भी हो सकता है। आपात स्थिति में सीट पर लगी बत्तियां जलेंगी और आपको नजदीकी दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता दिखाएंगी। जो यात्री दरवाजों के पास बैठे हैं उनसे निवेदन है कि वो बाहर जाने के दरवाजों को खोलने की विधि को ध्यान से समझ लें। यदि आपको इस बारे में कोई जानकारी चाहिए तो कृपया हमारे कैबिन क्रू से संपर्क करें। दरवाजे को खोलने के लिए हैंडल को दरवाजे पर दिखाए गए एरो की दिशा में घुमाएं। इस विमान में धूम्रपान एवं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीना सख्त मना है। टॉयलेट में स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं। स्मोक डिटेक्टरों से छेड़छाड़ करना अपराध है। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर आपके ऊपर के यूनिट से ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे। ऑक्सीजन लेने के लिए मास्क को अपनी नाक और मुंह पर लगाएं। इलास्टिक बैंड को सिर के ऊपर कस लें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अपना ऑक्सीजन मास्क ठीक तरह से लगाने के बाद कृपया अपने पास बैठे बच्चों तथा सहयात्रियों की मदद करें जिन्हें आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। शिशुओं के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन मास्क उपलब्ध हैं। हर सीट के लिए एक रक्षा जैकेट उपलब्ध है। आपात स्थिति में यदि विमान को पानी पर उतरना पड़े तो क्रू द्वारा आपको रक्षा जैकेट निकालने के लिए कहा जाएगा। इसे सिर के ऊपर से पहने तथा रक्षा जैकेट की बेल्ट को कमर पर कस कर बांधें जैसा कि आपको दिखाया गया है। रक्षा जैकेट को खुलाने के लिए सामने लगे लाल टॉवल को जोर से खींचें। आप इसे ऊपर लगी लाल टॉवल से हवा भरकर भी खुला सकते हैं। हर रक्षा जैकेट में एक बत्ती लगी हुई है जो बैटरी के पानी से छू जाने पर जल जाती है। रक्षा जैकेट को केवल क्रू के कहने पर या विमान से बाहर निकलने के तुरंत पहले खुलाएं। आवश्यकता होने पर क्रू द्वारा शिशुओं के लिए रक्षा जैकेट उपलब्ध कराई जाएगी। आपातकालीन लैंडिंग की असामान्य स्थिति में कृपया स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार ब्रेस पोजीशन में बैठें। कृपया सीट पॉकेट में रखे गए सुरक्षा संबंधी कार्ड को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि आपको इस बारे में कोई जानकारी चाहिए तो कृपया कैबिन क्रू से संपर्क करें जिन्हें आपकी सहायता करने में खुशी होगी। कृपया नोट करें कि बाहर जाने के दरवाजों की पहचान के लिए इस विमान में बाहर जाने के दरवाजों को हरे संकेत से दर्शाया गया है। इन हरे संकेतों के साथ एरो के निशान बाहर जाने के दरवाजों को दर्शाते हैं। इन हरे संकेतों द्वारा आप बाहर निकलने के नजदीकी दरवाजों का पता लगा सकते हैं। नजदीकी दरवाजा आपके पीछे की ओर भी हो सकता है। धन्यवाद। हम आपकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। Aircraft is still in a taxiway and I is going to the runway right now. That's the Airbus 380. That is, I think, Boeing 737. Sorry, 777 777.
is still waiting while it turns. As you can see, there are lots of aircraft that is in queue. This is the third, by the way, that is going to take off. And I think this Air India is still waiting for its chance. Here you go, Emirates 777, Boeing 777 is on the way. It's a huge aircraft. See, after that flight, now this Boeing 777 is going to fly. So yes, it's time to take up for this flight, the Emirates 777. Air India is in a queue now. Okay guys, now it's time to start a jet engine. I can feel the jet engine has been started, which will create a thrust, and because of the Newton third law, the plane aircraft will be uplifted. Yes, as you can hear, the jet engine has been started. Slowly it will change to the bright.
let's see what is inside this one. This is non-veg. I can see chicken, rice, and this dal makhani. Okay, one bun is there, and I think this is a dahi, and I think this is a fruits, and this is a sweet. That's it with a butter. Just taste this one and we'll see how it does taste. Okay, thank you. This is about one for this one. So once you are done, so what you have to do, just need to place this one and so that it will floss. करते हुए खुशी है। निर्धारित समय से 7 मिनट पहले आगमन करते हुए खुशी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। यहाँ इस समय दोपहर के 2:38 हो रहे हैं और बाहर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। सभी अतिथियों से निवेदन है कि सीट बेल्ट संकेत बंद किए जाने तक अपनी निर्धारित सीट पर ही बैठे रहें और ऊपर बने सामान कक्ष ना खोलें। सामान कक्ष खोलते समय सावधानी बरतें। कृपया सामने बैठे अतिथियों को पहले उतरने दें। जिन अतिथियों ने व्हीलचेयर की बुकिंग की है वह अपनी सीट पर ही बैठे रहें, अन्य सभी अतिथियों के उतरने के बाद आपकी सहायता की जाएगी। That I have safety is to Delhi airport. It is Indira Gandhi International Airport. So I'm going to I have to go for the immigration, and after that I need to collect the bag, and that's it. So it was very nice experience with Air India flight 787. I mean Boeing 787. I will just update you once I will complete my immigration process. So just stay tuned for the last time. Okay guys, I have completed my immigration process, and I have also collected my bag. So now it's time to go to home, and it's time to wrap up this video. I hope you like this video. If you like this video, please give us a thumbs up and please subscribe my YouTube channel. Thank you very much.